Good morning, students. We are going to start the bookwork of chapter number 1. Open page number 21. Today date is 24/08/20. Okay. First, we are going to discuss about the fill in the blanks. Okay. Fill in the blanks. First question is the other name of graphic tablet is drawing tablet. A smart card contains a small chip dash though it looks like a magnetic strip card. स्मार्ट कार्ड में क्या होता है? रैम चिप, स्मॉल रैम चिप. ओके. मेट्रो रेल टिकट्स ऑफ दिल्ली एंड कलकत्ता ऑल्सो यूज डैश कोड्स. दिस इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कोड्स. जो मेट्रो टिकट होते हैं वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कोड्स उसमें होते हैं. ओके. Next question is a dash provides the input for a voice recognition system. A microphone provides input. Dash are most suited to public information systems. पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे सुटेबल होता है टच स्क्रीन. ओके, जहाँ प्रेस नहीं करना पड़ता है, टच स्क्रीन. Choosing the type of dash is the first step in converting files into a Braille document. Choosing the type of Braille. Okay. Dash may contain one or many different colored pen. Colored pen जहाँ यूज होता है वो होता है पेन प्लॉटर. ओके, पेन प्लॉटर. Next we are going to give one word answer. Question number D, give one word answer. The specialty of first generation of computer is, first generation computer का specialty है vacuum tubes. The specialty of second generation computer is transistors. The specialty of third generation of computer is integrated circuit. The specialty of fourth generation of computer is microprocessor. The specialty of fifth generation of computer is artificial intelligence. ओके. ये जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी एंड डी, ये आप बुक में करोगे. ओके. और क्वेश्चन नंबर ए एंड सी हम कॉपी में करेंगे, कंप्यूटर की कॉपी में करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आंसर, क्वेश्चन आंसर. ओके. व्हाट इज MICR? व्हाट इज MICR? MICR or magnetic ink character recognition is a technique that enables a computer to directly read and input the character printed in magnetic ink. Okay? ये आपको लिखना है MICR में. What is a graphic tablet? A graphic tablet consists of two parts, the pen and the tablet. The pen makes the strokes and the tablet records it. It gives you real control over computer artwork. What are smart cards? A smart card is a simple storage device. It contains a smart RAM chip. The data written on the smart card can be read by inserting it into a machine. Okay. What is a microphone? A microphone are used in voice recognition system. Next question is what are touch screens? Touch screens are similar to concept keyboard. A grid of light beams or fine wires crisscross the computer screen. Touch screen are most suited to public information system. बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स दे रखे हैं बुक्स में, बट उसमें से जो इसके लिए सुटेबल है मैंने वो आपको लिख करके बताया है. ओके.
What are plotters? A plotter is an output device that is used to create high quality graphics, visuals, charts, graphs, tablets और diagrams. आई थिंक मैंने बुक में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं फील हो रही है. ओके. व्हाट इज ए पेन ड्राइव? Pen drive are devices that allow storage of computer files that you can remove and take from computers to computer. Okay. What do you know about fifth generation of computer? Fifth generation computing devices based on artificial intelligence are still in development, though there are some applications such as voice recognition that are being used today. Question number C. Write a short notes on drum plotter. Drum plotter, it is made up of a long cylinder and a pen carriage. Block in magnetic tapes. The tape is divided into logical blocks. One file can accommodate many logical blocks but must accommodate at least one whole blocks. Question number 3. External removal driver. These drives with an ability to function and be removed simplistically have had further application due to their flexibility. Okay. Fourth generation of computers. The microprocessor brought the fourth generation of computers as thousands of integrated circuits were built onto a silicon chip. Mini computer, it is a mid-sized computer. It lies between mainframe and microcomputers. आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. आप इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन बुक कॉपी में और बुक वर्क बुक में करोगे. स्पेलिंग सही रखना. अगर मेरी हैंडराइटिंग से नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ बुक में से देख करके करना, बट फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना. कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके. टुडे क्लास इज ओवर. हैव ए नाइस डे.